Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom. Hope you are doing well. So in today's lecture, we are going to be discussing the ratio of the Hijab Judgement as given by the Karnataka High Court. अगर आप CLAT, LLM, AILET, LLM, DULLM, any LLM entrance, basically ILI LLM entrance, या Judiciary की preparation कर रहे हैं, then this lecture and UGC net also, this lecture becomes extremely crucial for you because I am going to be discussing this from the point of view of what all can an examiner ask you from this 129 odd page judgment. So सबसे पहले case law, Resham versus State of Karnataka, and even if you are in a law school, this lecture will provide to be very useful for you to understand what exactly is happening. If you are taking the UPSC, especially the law optional, this can basically give you a lot of clarity on what to write in an answer. Alright, so Resham versus State of Karnataka. So this is basically, there were around 3 to 4 writ petitions जो कि 226 and 227 के पास लगी बिकॉज कर्नाटक हाई कोर्ट है तो 32 में आर्टिकल 32 में नहीं लग सकती बिकॉज वहाँ पे अगर होती तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते. वी आर टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट. सो वी आर इन पार्ट 6 चैप्टर 5 hopefully I'm not mistaken of the constitution where it's article 226 and where is article 32 given. That's under part 3, that is fundamental rights. Alright, तो इसके अंदर इस writ petition के अंदर which was filed under 226 and 227, the petitioners which were basically the Muslim students, they said कि भैया जो respondent number 2 है जो basically उसने लिस्ट में उन्होंने अपनी writ petition में अलग अलग writ petition में respondent के numbers बदले हुए हैं. जो PU कॉलेज है, जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है, कि आप मैंडेमस की writ इनके ऊपर लगाएं कि we command you to not interfere with the essential religious practice of hijab under Islam. Alright, so this was the main prayer. तो मैंने इस जजमेंट को काफ़ी ज़्यादा फिल्टर आउट किया हुआ है. आई हैव ओनली पिक्ड आउट दी रेलेवेंट बिट्स एंड पीसेस. तो क्वेश्चन सबसे पहले यही बन जाता है, मुद्दा जो बेसिकली पूरी बहस का जो मुद्दा है जिस पे आप कोर्ट से डिसीजन लेने जा रहे हैं, दैट इज हिजाब अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. हिजाब इज एसेंशियली अ हेड स्कार्फ. ऑलराइट, तो और एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया है जी 5 फरवरी 2022 को, and which says basically net it's saying that all students are requested or required to comply with the uniform code. Now how dare they pass this order? They don't have the power to pass this order. So this order's validity is being challenged and the college is being asked to not interfere in the ERP, that's the essential religious practice. But for that, for the court to give a decision on that, firstly it has to decide whether hijab is an essential religious practice to begin with. So we are in part 3. Now if you are preparing for any entrance, whether it's the UPSC prelims, whether it's LLM entrance, whether it's LLB entrance, especially 3-year 1, I want you to pause this lecture and I want you to write down the 6 fundamental rights as given in the part 3 of the Indian Constitution. So 12 and 13 तो general की category में आ रहे हैं. Then we have right to equality, then we have a right to freedom, then we have a right against exploitation, then we have right to freedom of religion. So article numbers please अपना table बना के लिख लीजिएगा. This is a very frequent question. So we are under the right to freedom of religion. तो 25 के ऊपर सारी लड़ाई हो रही है यहाँ पर. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. I won't go into the technicalities of this article, but we have to discuss the grounds. Alright, so I won't go into the meanings of the word conscience, propagation. That's way beyond the purview of this lecture. Subject to public order, morality and health. So which are the grounds which your freedom of basically religion is subject to? It's subject to public order, pointer number 1, morality and health, standard question that they ask. And other provisions of this part. Which part are we in? In part 3. तो कह रहा है जी other provisions of part 3, तो 12 से लेके 35. तो कह रहा है जी subject to all of these provisions and public order, morality and health, you have a freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Great, hopefully it is clear. Now these grounds are extremely important since thanks to this judgment, they become important for appearance in this year's examination. All persons, so this fundamental right is available to citizens and foreigners as well, because if it were available to citizens only, they would have used the word all citizens. So this is another standard MCQ. Which of the following is not available to foreigners? 25 is available to foreigners. Okay. All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. Great, ये बात तो हो गई. But it is subject to public order, morality and health. तो petitioner ने लगाया कि भैया ये तो मेरा आर्टिकल 25 आप वायलेट कर रहे हो by saying that I cannot wear hijab. तो state क्या कहेगा? State defined in article 12 in part 3, state is government plus parliament, union level पे.
गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, स्टेट लेवल पे अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, और बेसिकली ये आपकी लोकल और अदर अथॉरिटीज, और बेसिकली देयर इज एंटिटीज दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सब हो गया आर्टिकल 12 की स्टेट की परिभाषा में। तो बेसिकली पार्ट 3 का फंडा क्या है? फंडामेंटल राइट्स और नेगेटिव ऑब्लिगेशंस की स्टेट ये सब काम नहीं करेगा। तो 25 में आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो स्टेट उसको नहीं वायलेट करेगा। दैट इज द मेन कोर फंडा ऑफ फंडामेंटल राइट। बट स्टेट उस पर थोड़ी बहुत रोक लगा सकता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो स्टेट क्या आर्ग्यू करेगा? पेटिशनर तो आर्ग्यू कर दे मेरा 25 वायलेट हो रहा है, स्टेट क्या आर्ग्यू करेगा कि देवी जी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के चक्कर में हमें ये रोकना पड़ रहा है। तो अब लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाई हो गई है, तो लड़ाई पे फिर कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वी वोंट एंटर इनटू फर्दर डिस्कशंस ऑन 25। ऑलराइट, आर्टिकल 25 के ऊपर जी बेसिकली जो मेन जो मुद्दा, जो मेन जो आर्ग्यूमेंट जो पेटिशनर्स ने यूज़ करा है वो ये है कि आर्टिकल 25 बिजो इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जैसे आपने डिसीजन दिया था कि बच्चे जो थे उसमें ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी के, वो कहते जी नेशनल एंथम गाऊंगा नहीं because it violates it is against my religion, I don't feel very comfortable, but I'll stand and I'll respect it. तो आर्टिकल 25 में आपने कहा था ना that the expulsion of students from school is violative of 25, 19, 1A etc. तो सेम केस सेम रेशियो हमारे यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए। देन दे सेड कि भाई पर्सनल अपीयरेंस जो मेरी है एंड द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग that falls under the freedom of expression as you have declared in NALSA versus Union of India. So they are well using precedents. Precedents, why does our system of law work on precedents? Article 141, the doctrine of stare decisis, that all decisions of the Supreme Court shall be binding on all other courts in the country. Then they said कि भैया ऐसा है, privacy jurisprudence भी आपकी मेरी खराब करी। जो privacy jurisprudence आपने पैदा कराई थी KS Puttaswamy versus Union of India में, right to privacy you declared as a fundamental right. What one wears and how one dresses, you cannot decide because it falls under the right of privacy. So this basically the concept of privacy, that is to be very specific. Now this is basically the main contention, ये argument हो रहा है, कोर्ट नहीं बोल रहा, ये एक साइड से एक सिक्के का एक पहलू है। तो मेन पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ, देन वील बेसिकली डिस्कस कि स्टेट क्या कह रहा है, एंड देन विल कम टू द रेशियो ऑफ द जजमेंट, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत पॉइंट्स हैं और वो सारे आपने लिखने हैं if you're preparing for a law entrance, especially this year in 2022. Alright, so this is KS Puttaswamy versus Union of India. Now this is also an MCQ. Privacy jurisprudence कहाँ आई थी? Compensatory jurisprudence कहाँ आई थी? रुदल शाह versus State of Bihar. LLM वाली जनता is a very very popular MCQ. अच्छा, then this violates the doctrine of proper proportionality, that this is too extreme, that you've just banned hijab. You know, this is not even proportionate कि भैया थोड़ा सा जो आप जो काम करना चाह रहे हैं, that has to be in certain limits. And it violates 15 as well. 15 के अंदर ground क्या थे? 15 has been amended thrice. Ground क्या है? Religion, race, caste, sex, place of birth, right? Yeah, religion, race, caste, sex, place of birth. And 14 के अंदर this is gender based discrimination, सिर्फ लड़कियों को ही क्यों बोला जा रहा है? 14 के अंदर equality before law दी थी आपने। तो अभी पार्ट 3 में आपने मुझे इतने सारे राइट दिए और आप खुद ही वायलेट कर रहे हैं। तो 32 में और 226 में मेरे पास रेमेडी है। तो 32 में क्या था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थी। अंडर 32 दैट आई कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, आई हैव चोजन टू अप्रोच द हाई कोर्ट फर्स्ट अंडर 226. ऑब्वियसली दिस विल गो इनटू अपील, इट हैज़ टू गो टू अपील। देन आपके ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब साइन हुए थे जी? 10 दिसंबर 1948 को। और ऑल दिस इंटरनेशनल के बेसिकली इन्होंने बड़ी सारी ट्रीटी कॉवेनेंट्स वगैरह सब लिख दिए और कह दिया ये सब आप वायलेट कर रहे हैं इस अपने ऑर्डर के साथ, जो आप बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स वायलेट्स एवरीथिंग। तो ये तो पेटिशनर्स की मेन आर्ग्यूमेंट। तो 3-4 रेट पिटिशन लगी थी, तो चौथी रेट पिटिशन तो ये कह रही थी दैट्स नॉट रिलेटेड टू हिजाब। वो कह रही थी ये इन्वेस्टिगेट करो, NIA लाओ, CBI लाओ कि इतना ज़्यादा ये प्रोटेस्ट इंटरनेशनल सपोर्ट कैसे मिल गया, फलाना ढमकाना। तो इसको सबको एक जगह पे क्लब इन करके कोर्ट ने जजमेंट दी। राइट, respondent, that is primarily the state. State is defined where? Article 12 under part 3. I keep on repeating this so that it gets drilled into your head. Now वो कह रहे हैं देवी जी 25 is not absolute, it has reasonable restrictions. ऐसा है ना, अगर आपके पास ये एब्सोल्यूट राइट होता है, एब्सोल्यूट कुछ होती हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आर्टिकल 105, यू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, कोई केस वेस नहीं करेगा। कनेक्टेड कॉन्सेप्ट इन 121, 122, राइट, 121 में और 122 में दोनों के अंदर क्या करें? जज पार्लियामेंट वालों की बात में बात कर, जज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और कंडक्ट ऑफ जजेस एक्सेप्ट व्हेन द रिमूवल प्रोसीजर इज इनिशिएटेड, तो पार्लियामेंट उनके बारे में नहीं बात करेगा। तो सब लोग पार्लियामेंट में खुशी मंगल के माहौल में रहते हैं कि जी हमें बेसिकली एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी को डर के माहौल में नहीं बैठेगा, सब बेसिकली यहाँ पे खुली चौड़ में घूमेंगे। अच्छा, फिर
स्टेट कह रहा है कौन सी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस थी आपकी, देयर इज नो एविडेंस, कुरान में तो इसका कोई मेंशन है नहीं इतना एक्सप्लिसिट, और कोई पेनल्टी भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी कि अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगी तो क्या पेनल्टी है, सो देयर इज नो प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली. अच्छा, देन द स्कूल्स दे आर क्वालिफाइड पब्लिक प्लेसेस, so they're qualified कि भाई only a specific set of people can enter that specific public place, it's not a free for all. So there has to be a dress code, so you have to follow that dress code. You wearing the hijab is a violation of that dress code, and you are not meeting the qualification to enter that public place then. So that public place, because it's a qualified public place, वो अपने कानून, अपने छोटे छोटे नियम बना सकता है. ये स्टेट की तरफ से जवाब आ रहा है. और एडमिशन फॉर्म में पेरेंट ने कहा था कि जी हम we will adhere to your uniform dress code etc. and we won't create a ruckus out of it. You had already signed it. आपने पढ़कर एडमिशन ली थी, को नहीं पसंद आ रहा तो किसी और कॉलेज में चले जाइए. अच्छा, दिस इज पावर टू प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म इज ऑल्सो इनहेरेंट इन स्कूल एजुकेशन, क्योंकि इन्होंने यूनिफॉर्म भी चैलेंज कर दी कि भैया ये यूनिफॉर्म कैसे, मतलब ये यूनिफॉर्म कैसे बता सकते थे हमें, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में वायलेशन है. थोड़ा लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट है बाय वकील्स, बेसिकली स्टूडेंट बेचारे क्या ही आर्ग्यू करेंगे. तो ये वकील अब क्या आर्ग्यू करेगा ना, क्योंकि ज़्यादा कोई केस क्या बोलते हैं बनेगा नहीं तो फिर, और फिर थोड़ा सा कोर्ट को फिर थोड़ा वॉल्यूमिनस बना के, जैसे आप सेमेस्टर में आंसर लंबे करते थे, ऐसे वकील साहब भी अपनी प्लीडिंग्स लंबे करते हैं, क्योंकि अदरवाइज इफ इट इज टू मच टू द पॉइंट मे जस्ट गेट डिसमिस्ड राइट आउट ऑफ द विंडो, एंड देन द क्लाइंट विल से कि भाई साहब आप कर क्या रहे थे, आपको किस बात के पैसे दिए. अच्छा, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इज वेल, इफ तो स्टेट कह रहा है कि इफ़ यू आर क्लेमिंग कि जी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बेसिकली वायलेट हो रहा है, देन हाउ कैन यू क्लेम कि आर्टिकल 25 भी आपका वायलेट हो रहा है. मतलब दो नाव में पैर कैसे रख रहे हो, या तो एक जगह कह रहे हो या एक जगह कह रहे हो. एंड देन टीचर्स हैव अ पेरेंटल एंड अ क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी ओवर स्टूडेंट्स, एंड यू नीड टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, यू नीड नॉट गो रियली आफ्टर देम. तो इतनी बड़ी बहस के बाद तो ये रिटर्न रिप्लाई आ गया, सब कुछ हो गया. तो आपके पास अब क्या आ रहा है, तो कोर्ट एज यूजुअल मेन इशू उसने फ्रेम कर दिया कि पहले मुझे ढूंढना है डिसीजन देने से पहले कि इज इट एन ERP दैट्स एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 25. देन जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्रिप्शन की जो पावर है, दैट वेदर स्कूल कैन ऑर्डर यूनिफॉर्म, माइंड यू दिस इज वी आर इन अ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, अभी आप यूनिवर्सिटी गए नहीं है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज. सो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब की जा सकती है बाय स्कूल अथॉरिटीज, दैट्स अंडर 9 क्लॉज 1A एंड 21 आर नॉट बीइंग वायलेटेड, मतलब प्रिवेसी तो नहीं वायलेट हो रही किसी. एंड जो गवर्नमेंट ऑर्डर था उसकी क्या वैलिडिटी थी, एंड वेदर इट्स वायलेटिंग 14 एंड 15, राइट. सिंपल से 3-4 फंडे, एंड एक कोर वारंटों की रिट भी बनी थी अगेंस्ट सर्टन अथॉरिटीज. वी वोंट गेट इनटू दैट, दैट्स प्रीटी मच इररिलेवेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर डिस्कशन. तो जजमेंट में सबसे पहले हमारे बेंच ने सबसे पहले सेक्युलरिज्म की भाषा में घुस गए. सेक्युलरिज्म बोल दिया कि जी सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एज डिफाइंड इन केशवानंद भारती. इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में इन्होंने सेक्युलरिज्म की एक्चुअल भाषा दे दी थी, एंड सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. केशवानंद भारती जजमेंट डेट क्या है, 24 अप्रैल 1973. 42nd अमेंडमेंट की डेट क्या है, 1976 एज एन ईयर. एंड कौन कौन से शब्द आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में एज एन प्रियम्बल में, स्पेसिफिकली सेक्युलर, सोशलिस्ट, ये दो आए थे या ये दो पहले से थे, इंटेग्रिटी था या नहीं था, चेक कर लीजिएगा, राइट. तो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ता है बीच बीच में, राइट. तो इनमें से कौन से शब्द आए थे 42nd अमेंडमेंट से, और इंटेग्रिटी आया था कि नहीं आया था, ठीक है जी. तो सेक्युलर तो पक्का आया था 42nd अमेंडमेंट से. सो वी मेड इट एक्सप्लिसिट बाय द 42nd अमेंडमेंट दैट सेक्युलरिज्म इज नाउ, मतलब सेक्युलर प्रियम्बल में हमने डाल दिया था. बट 25 से ऑलमोस्ट अब अगर 29-30 तक देखेंगे तो प्रीटी मच रिलीजन के रिलेटेड आर्टिकल्स ऑलरेडी थे भी कॉन्स्टिट्यूशन में. सो दे वर एब इंसेप्शियो present in the constitution. We just made it very explicit in the preamble via the 42nd amendment. Okay. So basically यहाँ पे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में सेक्युलरिज्म की भाषा दे दी गई थी, which a state has no religion of its own and everyone is free to profess their own religion. We don't have any official religion, and basically 25 के अंदर जो चीज़ दे रखी है वही चीज़ है यहाँ पर. अब हम आ रहे हैं now, if you're going to be taking CLAT LLM this year, ये क्वेश्चन आना ही आना है. ऑलराइट, सो मार्क इट आउट. LLM कोई भी एंट्रेंस दे रहे हैं, UGC नेट कोई भी दे रहे हैं, इवन LLB एंट्रेंस थोड़ा सा भी जरा 5 मिनट रुकेंगे वहाँ से कर लेंगे. तो अब वो कह रहे हैं जी रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस शुड हैव द फॉलोइंग indicia. So these 4 points they have given, write them down.
ठीक है जी. Not every activity associated with the religion is essential to such religion. Practice should be fundamental to religion, and it should be from the time immemorial. Sounds like a custom almost, doesn't it? Right? Custom is defined where in the Constitution? Nowhere exactly. But I think Article 13 में उसका mention थोड़ी सी बात की गई है. वैसे custom is explicitly defined under the Hindu Marriage Act, Special Marriage Act, basically all of the personal laws. Foundation of the practice must precede the religion itself or should be co-founded at the origin of the religion. Pause कर करके please लिख लीजिएगा, नहीं तो judgment में से ये पैरा निकाल लीजिए if you're serious about taking the exam. Such practice must form the cornerstone of religion itself. That practice is not observed or followed, it would result in the change of religion itself. अरे बाप रे. So almost like saying essential religious practice. Wearing a turban by a Sikh is an essential religious practice. क्योंकि अगर ये बदला तो maybe it just changes the entire religion itself. कि सिक्खी में ज़्यादा तो कोई फर्क आ जाएगा. Such practice must be binding nature of the religion itself, and it must be compelling. If it meets the following 4 criterions, it is an essential religious practice. Great question. Standard MC. Which of the following is not a criterion as laid by the Karnataka High Court for an essential religious practice? That's how the examiner thinks. हमारा दिन रात का यही काम है, तो हम यही करते रहते हैं कि एग्जामिनर क्या पूछेगा. कोचिंग अकेडमी का धर्म यही है कि स्टूडेंट की मदद करे. अच्छा, एंड Karnataka High Court ने कहा कि essential religious practice has to be alignment with constitutional values. Just because it's an essential religious practice doesn't mean that 25 will guarantee it has to comply with other constitutional values. Almost like again saying 25 के अंदर होता है ना other provisions of this part, right? So it means that basically आपको concurrently follow out करना है. Okay, so ayat of 242 Quran they have reproduced, and उसकी English translation, it is expected that you will use your common sense. So the court was very happy reading this ayat. Yeah, ayat pronunciation, excuse my Arabic pronunciation. Now it says sources of Mohammedan law. This has to pop up in this year's exams. Alright, mark it out. What are the sources? The Quran, pehla source. The Hadith, that is precepts, actions and sayings of the Prophet Muhammad, not written down during his lifetime but preserved by tradition and handed down by authorized persons. कृपया करके हादिस का मतलब लिख लीजिए. कई जगह हादिथ लिखा होता है, कई जगह हादिस लिखा होता है. I'm really not sure about the etymology and how these words की pronunciation works, so ignore it. Ijma, that is a concurrence of opinion of the companions of Muhammad and his disciples. It's pretty much an interpretation. And qiyas being analogical deductions derived from a comparison of the first 3 sources when they did not apply to the particular case, almost like R.S. Agarwal logical deduction, right? तो qiyas is the last one. तो 4 source हो गए, लिख लीजिए. Quran, Hadith, Ijma, qiyas, right? Very common MCQ. Which of the following is not a source of Muslim law? I think they asked this in DULLB 2021. The option was Shruti as well. Alright. अब शायरा बानो के केस में चलेगा, because शायरा बानो के अंदर केस के अंदर अभी recently Muslim jurisprudence काफ़ी अच्छे से समझाई गई थी उस केस में. So now there are 4 sources of Islamic law. ये तो हमने बात कर ही ली, right? उसके अंदर कह रहा है now there are degrees of compliances also. LLM वाली जनता तो पक्का ही लिख लो. So there are 5 degrees. First degree is fard. Whatever is commanded in the Quran, Hadith or Ijma must be obeyed. Wajib, perhaps a less compulsory form. Second degree में चलते हैं. Masnoon या mandoob and mustahab. These are recommended actions. Third degree, jaiz or mubah. So these are in decreasing order of compliance. Jaiz or mubah. So these are permissible actions as to which religion is indifferent. I'll just check my mic whether it's gone off. No, it's not. Okay. Sometimes it goes off and then you're speaking and then you find out कि पूरा lecture shoot हो गया and then the mic went off. ठीक है. 4th degree, makruh. That which is reprobated as unworthy. 5th degree is haram. That which is forbidden. 5 degrees of compliance. LLM वाली जनता लिखे इसको. Alright. Then petitioners basically, well, they sought to prove that hijab is sourced from Quran. इनका main जो argument था कि भैया ये कुरान की compliance में हमें तो hijab पहनना ही पड़ेगा. ठीक है. Alright, now the main ratio is कि जी whatever stated in the Quran is directly, so they went into a lot of commentaries. I'm not going to go into that. They said there is an absence of penalty, they meaning the judges. The absence of penalty, this is at most an apparel which is a means to access public places and not a religious end in itself. And I'll quote from the judgment. अच्छा, एक तो इन्होंने ये CLAT LLM में पक्का ये इस पेपर का नाम पूछ लेगा. Sarah Slininger from Centralia, Illinois, in a research paper said veiled women, hijab, religion and cultural practice. This was referred to a lot in this judgment. ये नाम और ये author please mark out कर लीजिएगा. Alright.
Then the Quran shows concern for the cases of molestation of innocent women. Now, तो judges basically went into the time era of कब ये mention हुआ कुरान के, उस time पे basically conditions क्या prevail कर रही थी, and therefore it recommended wearing of this and other apparel as a measure of social security. Now this is extremely crucial. Just look at the ratio of the decision. Now you will basically find out why they have decided that hijab is not an essential religious practice. Maybe in the course of time some elements of religion permeated into this practice as ordinarily happens in any religion. However, that per se means by itself does not render the practice predominantly religious and much less essential. Alright. तो वो कमेंट्री जो वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं पेटिशनर, उसके अंदर भी चले गए. वो कह रहे जी वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स द क्वेश्चन, आर दीज कंडीशंस प्रेजेंट अमंग अस टुडे. भैया उस टाइम पे मोलेस्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा इशू था, उस टाइम पे इतनी लाइट नहीं होती थी, इतनी सेफ्टी नहीं थी, वुमेन weren't as you know they weren't as empowered as they are today, तब बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे, तो इसीलिए उन्होंने तब हिजाब रखा. बट हिजाब अगेन, तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि it just may have been as an apparel to access public places for the safety of women. So thus it can be reasonably assumed that the practice of wearing hijab had a thick nexus in the socio-cultural conditions then prevalent जब भी Islam basically पैदा हुआ way back then in the Middle East. In the region, the veil was a safe means, that is the hijab, for the women to leave the confines of their homes. तो वो तो तब का ज़माना था. अब आज भी बेसिकली उस टाइम पे कहीं कमेंट्री लिखा है कि नदी पार करके ही पूजा करने जाना है, तो कह रहे जी आज तो पुल बन गया है, तो क्या पता आज नदी पार करने की उतनी ज़रूरत नहीं है डूब कर. Basically that's what the analogy is. In the view of the above discussion, we are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. Okay, this is only directory, there is no penalty involved, plus socio-economic condition में देखूँ, socio-cultural condition rather, and it doesn't really make sense to declare it as an essential religious practice. You are free to wear it. You're free to wear it, obviously not in school. Free to wear it wherever if you think कि भैया हाँ मतलब I feel safe and I have to wear it. But it certainly is not an essential religious practice. Now, since it is not an essential religious practice, therefore the schools trying to prohibit you does not violate 25. It's as simple as that. Hopefully the discussion is clear. अच्छा, अब फिर यूनिफॉर्म पे बात होगी तो दिस वाज डिसमिस्ड. बहुत आई थिंक 3-4 पेज की डिस्कशन करी हुई है, नॉट रियली रेलेवेंट फॉर आवर पर्पस. दे सेड इट्स अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड. वो NIA CBI वाले भैया को उन्होंने बाहर फेंक दिया कि प्लीज़ चुप रहो और अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपने घर में रखो. एंड या दैट्स अबाउट इट. राइट, तो होपफुली रेशियो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ था. Now, is this a necessarily correct decision or not? That the appeals will decide. That's a debate that I leave to you. My job is primarily just to explain to you what has happened. All right, and rest तो हमारा वो है ना, liberty है, thought expression, belief, faith, worship, preamble के अंदर ही तो दे रखी. You are free to believe whatever that you choose to believe. All right, wishing you all the very best. Take care. Bye.